I love this place. I just love this thing. When the night has come and the land is dark and the moon This is is the not only Tokyo. light we Or see. is it? Hey everyone, it's an artificial island है और इसके वजह से अभी मैं यहाँ आई तो बहुत विंडी फील हो रहा है यहाँ पे। No, I won't be afraid. No, be Oh look, just spotted the Sony headquarters here. as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Whoa, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. So I'm here at Odaiba. Stand by me. So guys, I'm here in Odaiba, a very, very, very pretty place. And I cannot explain actually what I'm feeling here, but it's probably the bestest location that I've visited in Japan. Behind me is Pellet Town Ferris wheel. Look at how pretty that is. Oh my god, I could spot the rainbow bridge there. Oh god, this is a dream. I really can't believe I'm here because this is the dream location that I've always thought of being when I'd be in Japan. That's what I used to think कि मैं यहाँ आऊँगी ज़रूर एक बार आऊँगी, and here I am. God pinch me. Look, maple leaf on the Ferris wheel. Actually, this makes me remember of Singapore, the Esplanade area and the whole Merlion area. It was exactly the way this looks like. I'm trying to find the Rainbow Bridge because that's the thing I was super excited about, the suspension bridge, and I hope I get to find that. I am actually very fortunate enough to be walking here on this land. The buildings are, oh my god, ऐसा लग रहा है ना स्मोक है बट बेसिकली क्लाउड है. I'm walking into the Lawson station. कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी. Hats off to you कि मैं कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोस बना. एक्चुअली मैं सुबह से उठती हूँ तो इट्स अ टास्क टू मेक वीडियोस एंड टू कीप ऑन ब्लॉगिंग बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप थक जाते हो. मैं जैसे सुबह से चल रही हूँ, सुबह 8 बजे से आई एम कंटिन्यूसली वॉकिंग और अभी रात के 8 होने वाला है. सो इट्स लाइक कंटिन्यूसली वॉकिंग एंड दैट्स व्हाई आई गेट टायर्ड. कई बार मुझे थकान महसूस होती है बट आई कीप ऑन ब्लॉगिंग. कभी कभी मैं बहुत थकी हुई दिखती भी हूँ. सो आई होप यू गाइज डोंट माइंड दैट क्योंकि कंस्टेंट वॉकिंग की वजह से और कभी कभी खाने को भी सही you don't get because since I prefer eating vegetarian food, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कुछ भी वेजिटेरियन मिलना. So don't mind me looking very sick sometimes, but that's because the fatigue and everything is showing up. अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए. और ये जो भी मैंने जापान में ट्रैवल किया है ये दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और आप भी देखिए ये सारे लोकेशंस जो मैं गई हूँ. एंड आई होप कि अगर आप जापान जाए तो मेरे ये सारे जो भी वीडियोस है वो आपको हेल्पफुल हो.
मेरे सामने सस्पेंशन ब्रिज है, रेनबो ब्रिज, जिसे मैं हमेशा से देखना चाहती थी। एंड आई एम फाइनली हियर, आई एम सो हैप्पी, रियली हैप्पी। यू कैन एक्चुअली नो हाउ एक्साइटेड आई एम। मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे वॉइस से आपको पता चल रहा होगा। मेरे सामने सस्पेंशन ब्रिज, रेनबो ब्रिज इज देयर। एक्चुअली वॉकिंग वेरी फास्ट सो दैट आई कुड शो यू गाइस। फिर से यहाँ पे बैकड्रॉप में बहुत खूबसूरत सिटी दिख रही है। ओह शिट, दिस इज सो प्रिटी, सो डैम प्रिटी। We are moving closer to the Rainbow Bridge. This has been my dream. Thank you so much universe to bring me here. I can't actually believe मैं अपने आँखों से इसे देख रही हूँ. I'm gonna zoom it so that you get clear idea what I'm talking about. इस सामने ये खूबसूरत नज़ारा है. Enjoy. वहाँ से ट्रेन जा रही है, आपको दिख रहा है guys? I'm living my dream. जितने वीडियोस बनाऊँ यहाँ पे कम है. Look at that, Fuji Television headquarters. I've heard you can actually ride up to that Hachitama Observatory sphere over there. यहाँ मैं आ गई हूँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने, ये और यहाँ पे है रेनबो सस्पेंशन. Welcome to the Starlight Parade 星が降る眠れない夜にもう一度連れて行ってあの世界へ Here we are. This looks like Brooklyn Bridge and that looks like Statue of Liberty in New York. पूरा कॉपी मारा इन लोगों ने, but that's actually really pretty. और सामने actually the thing is कि सामने टोक्यो टावर दिखता है, so that's the thing which is unique here. दिख रहा है आप लोगों को? That's the replica of Statue of Liberty. पूरा फील आ रहा है न्यूयॉर्क स्काईलाइन की. मैंने एक्चुअली ओदाइबा को उतना ज़्यादा गूगल नहीं किया था, सो फॉर मी इट्स अ सरप्राइज एंड आई फील जेन्युइनली यू नो हैप्पी. मतलब sometimes you come to a place and you feel like you belong to this place even though it's an artificial island. जिस तरीके से इसे पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया है, it's amazing. Hats off to Japan for being so brilliant in terms of everything. Odaiba, you have my heart and I'm keeping a place of my heart in this location and I look forward to visit this place again and again and again. So I've entered Aquacity Odaiba and look how pretty the interior is. That is love seat. यार यहाँ पे हर चीज़ इतनी ज़्यादा you know it catches your attention. Eye candy types. I don't understand क्या क्या कैप्चर करूँ कभी-कभी. It's so confusing. मेरे सारे कैमरे की चार्जिंग चली जा चुकी है और कुछ ही देर पे मोबाइल भी जाने वाला है. उतने में मैं जितना फुटेज ले सकती हूँ ले रही हूँ so that you guys can see and not miss upon things that I am actually seeing here. I think अभी के लिए इतना ही रिकॉर्ड करती हूँ because I'm really tired. Good night guys. I hope you guys had an amazing time here with me in Odaiba. If you like the video, please like, share, subscribe. You know the drill. बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए. Just like it.